Hey friends, Shamal Kapadia here. Okay, welcome back all of y'all. Walking through the journey of constructions now. Very simple chapter, hardly around 18 to 20 sums. And उसी में से खेलना है. बहुत सारे sums तो same है. Are you getting it? So in this chapter, कुछ diagrams में actual scale, compass से करूँगा और कुछ diagrams I'll just draw freehand. Right? Just देखेंगे कैसे चलता है. My main concept is not the accuracy in my diagrams. मेरा aim, मेरा objective, मेरा goal है कि मैं जो भी steps कर रहा हूँ, steps, वो by heart नहीं करना है, वो समझ के remember करना है. You have to remember them. Okay, fine. If you want to by heart, you may by heart, but after understanding. कि हाँ, इसके बाद सर ये करने वाले हैं, इसके बाद वो क्यों किया, हर एक का एक reason होता है. Right? For example, अगर मुझे line है, मेरे पास एक line है, मुझे मिड पॉइंट बनाना है. आई कैन नॉट प्लॉट अ मिड पॉइंट डायरेक्टली. आई हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट विल बी अ मिड पॉइंट वेयर बोथ द लाइंस मीट. तो क्यों करते हैं, हर एक का एक रीजन होता है. सो दैट रीजन हैज टू बी रिमेंबर्ड एंड फॉलोड वेरी थॉरली. So in this chapter there are two varieties of sums. दो varieties हैं. पहला triangle बनाने का using scaling factor. Scaling factor means the two triangles are similar. They're similar triangles. एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. That's it. But they will be similar. Similar मतलब sides will be in proportion and the angles will be equal. And दूसरा type of sums which we are going to encounter is we draw a circle. And from external point or a point on the circle, we draw tangents. So there are basically two varieties of question: similar triangles and construction of tangent to the circles. So we begin with our first solved example. Construct a triangle similar to the given triangle ABC with the sides equal to 3/4 of the corresponding sides of the triangle ABC. Listen, मुझे क्या करना है, in the solved example number 1 में I have to construct a triangle, उसको नाम देता हूं PQR. So let's construct triangle PQR. मुझे बोला है कि PQR is similar to triangle ABC. Triangle PQR क्या है, similar है ना to triangle ABC, such that ये triangle का sides of triangle PQR is 3/4 of sides of triangle. It's a ratio ABC. मतलब PQR जो है ना वो 3/4 है ABC triangle के. Let's construct. So let's begin the show guys. इससे मुझे एक चीज तो पता चली कि अगर मैं ABC को नीचे लेके आता हूं, ओके, दिस इज द वे आई रिमेंबर. PQR है ABC which is a multiplication, it becomes division. Wouldn't that be 3:4? इसका मतलब PQR के जितने भी साइड्स है ना, साइड्स, एंड ABC के जितने भी साइड्स हैं, they will be in the ratio 3:4. Now listen. PQR के adjacent 3 है, बाजू में 3 है. ABC has its adjacent 4. PQR और ABC में बड़ा कौन है, ABC बड़ा है. Because ABC has the sides which is greater than the sides of PQR. ABC का sides and PQR का sides अगर देखोगे तो ABC के sides बड़े हैं. तो दो ट्राइंगल में बड़ा वाला कौन होने वाला है, ABC. समझा क्या? PQR तो कंस्ट्रक्ट करने का है. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ रैंडम ट्राइंगल. कोई भी अक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं मैं. दिस इज अ रैंडम ट्राइंगल नेम्ड एज AB and C. ठीक है ना, जस्ट एनी डायमेंशंस. अच्छा सुनो मेरी बात. आई वॉन्ट टू ड्रॉ PQR such that the ratio of the sides is 3:4. क्या करने का, रूल नंबर 1,
पहले ABC बना दिया. Rule number 2, from the vertex A just stretch a line, random direction, random angle, stretch a line. एक लाइन बनाया मैंने. ये लाइन को, रेड कलर का लाइन को break it, divide it into 4 parts. You will say, sir, why 4 parts? Out of 3 and 4, who is big? Who is greater? 4 is greater. So I will say, out of 3 and 4, 4 is greater. Yeah. Therefore, divide AB completely in 4 parts. 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ये लाइन को, 4 इक्वल हिस्से. So what you do is all of y'all, you take a rounder. राउंडर मतलब क्या? You take a compass. ठीक है ना? पहले कंपास का जो राउंडर का टिप है ना, keep it on A, right? Keep it on A. And lump sum, you take any random dimensions, cut an arc. Okay, this is one arc. समझा क्या? Then keep the rounder का tip out here at this position, same dimensions, cut an arc. Same dimensions, cut an arc. Same dimensions, cut an arc. So basically what I'm doing is I'm going to cut 4 equal arcs of random dimensions. So taking the rounder cut tip out here, A dash, A dash dash, A triple dash and A quadruple dash, chopple dash. Chalo na. Yeah. And what you do is you join this last, the 4th division with B. तो ये बन गया मेरा कंप्लीट फिगर. अच्छा मेरी बात सुनो अभी. चौथे डिवीजन पे साइड आएगा, एबीसी का साइड आएगा 4th डिवीजन पे. PQR विल बी ब्रोकन एट द 3rd डिवीजन. मतलब इधर से एक पैरेलल लाइन आई विल बी एक्सटेंडिंग. I'll be pulling a parallel line which is parallel to this at the 3rd division because the ratio is 3:4. ठीक है ना? So parallel कैसे बनाऊंगा? How will I make a parallel? Check. Again, gonna take this, the rounder, the compass, keep it out here. At this point, just stretch it randomly, lump sum stretch out करो. Yes, and draw an arc. And now as I said, same dimensions को A3 पे रखो, that is A triple dash, and you just cut an arc. Are you understanding? Same dimensions, huh? जितना इधर से कट किया उतना ही इधर से कट करो, right? Now just इसको थोड़ा extend करो, keeping it at this point, okay. Extend it till where it has been cut, and from here you cut the same arc. मतलब that means my kids that अगर इधर से जो distance है ना, इधर से जितना dimensions है, keeping the tip of the rounder out here, stretch it till here, same dimensions from A3, cut an arc, join this and this, join it. Yeah, this is how it is going to be looking like. Perfect? Yes. And definitely these both lines have to be parallel lines. अच्छा, now listen. Same ये जैसा है ना, इधर से भी ऐसा ही होना चाहिए ऊपर के तरफ. So what I'll do is I'll continue the process. Again, keeping the rounder tip out here at B. Cut a random, ऐसे random लो अपने हिसाब से, cut an arc, and now don't move this, keep it at this new point, cut an arc, right guys? Now what you do is जितना ये distance है ना अभी ये,
थोड़ा मूव करके इतना जो डिस्टेंस है, सेम यू टेक इट आउट हियर, cut an arc and you join it. That should be your answer. Look, this is very tedious for me doing out here. When I draw freehand, it will be much more better explained, I guess. Freehand. These both are going to be parallel. So haven't we divided, and I will call this as C dash. Yes, C dash. This is going to be B dash. So I can say, instead of dash, I have given it a name, na? PQR. ओके PQR एक नाम लिया है, पर इसमें मैं PQR नहीं ले सकता हूं. The only reason is there is a common point A. तो A के साथ A, ठीक है ना, B के साथ B dash, C के साथ C dash. So A, B dash, C dash should be the naming. B dash, C dash and A dash. Perfect. So instead of PQR guys, I will write A, B dash, C dash. I thought कि हाँ PQR एक बन सकता है, but have you understood this? Now if I happen to prove them similar, it's very simple. I can say that in triangle ABC and AB dash C dash, in triangle ABC and triangle AB dash C dash, first, have you heard about a common angle? Angle CAB is equal to angle C dash AB dash. So angle CAB is equal to angle C dash AB dash. The reason is a common angle. Second, angle ABC, this one and this one is also equal, because अगर lines parallel है बच्चों, तो can I say obviously by corresponding angle test, corresponding angles, they are equal. So angle ABC is equal to angle AB dash C dash. The reason is corresponding angles, and therefore I can say triangle ABC is similar to triangle AB dash C dash. The reason is angle test of similarity or angle test criterion for similarity. Guys, एक बार सिर्फ एक बार अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे. सो यू गेट AB अपॉन AB डैश इज BC अपॉन BC डैश, और BC अपॉन B डैश C डैश इज AC अपॉन AC डैश, एंड द रेशियो इज 3:4. इसमें होगा 4:3. क्यों 4:3? क्योंकि बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना ABC, उसका 4 है रेशियो और डैश वाले ट्राइंगल का 3 है. राइट? सो कैन आई से द डैश ट्राइंगल इज अ स्मॉलर वन, द बिग ट्राइंगल इज अ लार्जर वन. सो दिस इज द वे वी गो अहेड विद इट गाइस. राइट? इधर अगेन एज आई सेड, tedious out here, but you have understood the concept. Let me do one more sum to justify my league. The question is, given triangle ABC, construct another triangle whose sides are 5/3 the corresponding sides of ABC. मतलब हमारा जो नया ट्राइंगल होगा, जिसको मैं नाम दूंगा A, B dash, C dash, is 5/3 this triangle. That means in the second solved example, I can say the sides of the triangle A, B dash, C dash is 5:3 times the sides of the triangle ABC. ABC नीचे आ जाएगा. A multiplication there on the other side, when it comes, it becomes division. तो मुझे प्लीज बताओ कि अगर ये नीचे आया तो obviously A, B dash, C dash के बाजू में there is 5 and adjacent to ABC there is going to be 3. Who is big? Obviously the dash वाला triangle is big. It's greater than the regular ABC triangle, right? So always start with the regular or the dash. The regular triangle हमेशा regular के साथ चालू करना होता है, please. So I will draw a random triangle ABC. This is my triangle ABC. Same as the previous sum.
सब सेम, स्टार्टिंग विल ऑलवेज बी द सेम. जस्ट स्ट्रेच अ लाइन, जस्ट स्ट्रेच अ लाइन. ये जो रेड लाइन है ना, इसको ग्रेटर कौन है, दोनों में ग्रेटर कौन है, हु इज ग्रेटर, हु इज ग्रेटर, 5. सो इसको 5 इक्वल साइड्स में डिवाइड करो. इसमें हु वाज ग्रेटर, 4 वाज ग्रेटर ना, तो आई डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल साइड्स. In this it has to be 5 equal sides. So again that same old monotony. You take the rounder, it's a slow process though. Okay, you keep the tip, just इसको ऐसे random extend करो अपने हिसाब से, कोई specific dimensions नहीं है. You keep the tip of the rounder out here at A. Okay, you pull this in. You need 5 equal cuts. 1, 2, 3, 4, 5. So these are my 5 equal cuts. Correct, students? Perfect. Fine. Now what? What next? ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं. ABC छोटा ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल है. That means ये B है. This is the third side का रेशियो. 1, 2, 3. A dash, 2 dashes, 3 dashes, 4 dashes, 5 dashes. बराबर है. Now ABC has the ratio of the sides 3x, you can say. 5x and 3x अगर लेंगे तो 3x is the side of ABC, one of the side of triangle ABC. तो मैं 3 को B के साथ ज्वाइन करूंगा. यही तो कैच है. The catch is, इसमें ABC was big, इसमें ABC is small. You have to understand, don't by heart it. ABC के साथ जुड़ा है नंबर 3, मतलब थर्ड से I am going to draw or connect B. Okay, so my connection is going to be with 3, the third one. Yes, exactly. Perfect. What you do is you extend the lines. मुझे और extend करना पड़ेगा. Because I know that A, B dash, C dash will be 5x. 5x मतलब उससे बड़ा होगा, ABC से बड़ा होगा. करेक्ट है? इसको भी एक्सटेंड कर लो. रूलर से, just scale से use extend the line, man. You just extend the line. Right? Now what you do is, again with the same flow, same pattern, इसको पैरेलल मुझे ऐसा एक लाइन बनाना है. Take a random cut. Take a random cut. Keep the rounder cut tip out here. Lump sum. There is no specific dimensions. Okay. Cut an arc. Don't lift. Don't change the dimensions. Same dimensions. Same dimensions. Rounder का tip अभी इधर रखो. Cut an arc with the same dimensions. Are you understanding? अच्छा, अभी क्या करो, from here to here, इधर राउंडर का टिप प्लेस करो out here, extend it up till this much portion. एक्सटेंड किया, इधर से लेकर इधर तक रख के एक्सटेंड किया. अभी सेम इधर रखो, cut an arc, right? You cut an arc. So I get the 2 arcs. I'm going to join this and this. Exactly, lovely, है ना? Straight join किया, and these 2 parallel. And from here, this point is going to be your point B dash. अभी मुझे इसको वापस इससे पैरेलल ऐसा बनाना है, ऐसे का. You can't just make a parallel line. You can't do that, right? वापस same process. Take lump sum, your wish. Keep it out here, cut an arc. Same dimensions, keep it out here, cut an arc. ठीक है ना? And then इसको थोड़ा चेंज करते हैं. Keep the point out here and check. I am reducing it. Cut an arc. From here, cut an arc.
Now where they meet is going to be your answer. This one. Extend the line. So you extend it with a scale. So this is going to be somewhat like this. Okay, I will just extend it further. That point is going to be your C dash. Have you understood? Okay, you will get accurate. You will get that these two lines are also going to be parallel to each other. और ये prove भी कर सकते हो. This is like a justification. Justification का मतलब that you are proving even theoretically that yes, sides are in the ratio AB upon AB dash, the ratio is 3:5, or AB dash upon AB, or AC dash upon AC, or B dash C dash upon BC, सबका रेशियो 5:3 है. ऑब्वियसली क्योंकि ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है. देखो ना, ये 5 इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड है और ये 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड है. Getting it? So the ratio of the sides is 5:3. So always remember, you always start with your basic triangle, which is your triangle ABC. अगर मुझे बड़ा ट्राइंगल बनाना है तो मैं एक्सटेंड करूंगा, और अगर मुझे छोटा ट्राइंगल बनाना है तो उसी में काम चलेगा. Within that triangle ABC, you make cuts. So this was bigger triangle है, छोटा बना रहा हूं डैश वाला. इधर छोटा ट्राइंगल है ABC, I am producing a larger triangle. Have you understood the concepts of both of them? दो sums में है ना, और in 11.2, 11.1, I beg your pardon, we have 7 questions. 4 sums I'll be doing it with this rounder and everything. 3 sums I'll draw freehand, so I can actually tell you कि किधर point arc रख के किधर cut करना है more smoothly, right? So go through these 2 solved examples. We're gonna start with 11.1.